देयर इज अ मिथ कि अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूँ तो मेरे को बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा. दैट इज नॉट द केस विद पेट इंश्योरेंस. टॉकिंग अबाउट बेसिक प्लान जो अपन ऑफर करते हैं इज बेयरली 500 अ मंथ, ठीक है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू एक स्टारबक्स कॉफी, आई बिलीव, राइट? They will just go and ask for the discounts straight. So there's a better way of giving them discounts. So it's a win-win situation from both the sides. Absolutely. But it is through the pet insurance. insurance. How do you think that we can better tackle it? See what happens, like people don't know exactly is there pet insurance. Like if you see as a human medical insurance, a few years down the line, there was probably hardly any insurance. Nothing panics a pet parent like an emergency bill. Hey everyone, I'm Dr. Hansika Singh and welcome to another podcast of Tilting Hearts. 1 minute you're dealing with a UTI infection of your pet and the next minute you get a vet bill of about 25,000. In this episode, we'll decode what's inside a vet bill and what insurance actually covers. We have Mr. Abhishek Upadhyay from Petos Pet Insurance and Dr. Sadbir Josen, who's the founder of Metro Pet Hospital. Hi, Mr. Abhishek. Hello, Dr. Josen, Hello. sir. Hello. So, Mr. Abhishek, why don't you tell us something about Petos? Sure. So Petos is basically a pet insurance focused platform where we provide pet health insurance along with the wellness benefits. So we try to cover all the basic necessities of a pet parent that is supposed to be covered under insurance plan, whether it is vaccination, whether it is deworming, and apart from the illnesses, surgeries and accidentals under a single package plan, right? So we have 4 packages basically through which we are trying to solicit the insurance. And apart from that, we are also trying to reduce the out of pocket cost that is to be paid by pet parents over the clinics through Petos Pay. So we tried to build something around it, and we are about to launch our product in the upcoming month. So this is about Petos actually. Okay, great. So, Dr. Josen, sir, why don't you tell us that when and how did the concept of starting your own hospital, Metro Pet Hospital, cross your mind? Yes. So after completing my studies in '97, so my cousin and my sister were practicing in Vasant Kunj. So I was actually, my sister was my classmate, my twin sister, and we finished in '95 the BVSC, and I went to pursue my MVSC. And my cousin was 2 years senior to me, and then they started the clinic in Vasant Kunj. So I joined them, and in '97, and for 1 year I was with their combined practice, and then I started my own practice in Palamaya in 1998. So it all started from there. So, you have been there, doing your practice in so long. Of course, you are, that generation doctor that we all look up to. Okay, so let's picture this scenario that when a human patient visits a doctor, there is kind of they know the drill that first they have to pay the consultation fee up front. The treatment is billed separate and any additional medicines would be incurred separately. Easy, right? But when a pet parent visits a vet with their pet, there is often a gap in financial understanding. The vet sees it as a professional service, whereas the pet parent kind of expects a friendly discount on various aspects of the services. So I'm sure you also face this, funny little expectation gap in your practice on consistent basis. Yes, it all started like it's sort of when they used to come, the client were discussing everything. We're writing our prescriptions, and it was the scenario. There was no sort of consultation fees if I talk about fear down the line. So the concept of consultation fees was exactly, it's almost nil. So what, like we used to give, for example, the pet has to be treated for gastroenteritis. So the treatment with the drip or injections has to be given, then it becomes chargeable. So
Now initially, like even our practice now, we have just little demarcated that part, because if even if the injectables are not required, then we just had to consult. We write a prescription in the form of tablet or a syrup, then we charge the consultation separately. So but it slowly the clients also got to know, because the consultation has to be paid even if the any injectable or any this not being done. So, but it now, of course, yeah, it's coming in a routine. But initially, it was huge problem. Okay, so as you rightly pointed that out, I mean, even now when pet parents come to us, they'll have almost an hour long, 45 minutes consultation with the vet, get all the queries solved, and they'll just walk up, okay, thank you, doctor. Okay, consultation fee. So they'll be like, acha, wo bhi charge karoge. So, I mean, it's ludicrous that even now we have to explain the pet parents the basic concept of a doctor's consultation fee. Pet parents need to understand that our parents have also invested money on our education, on our degree, which is 5.5 years long or even longer. And now we have EMIs, or the rents to pay. We have to sustain our clinic or the hospital. We have staff salary. We have other expenses and our families to take care of. So, I mean, I just give this kind of example to pet parents, and this is how they understand it better. That if you visit a restaurant and you just say that, hey, I just had lunch over here, can I get a dinner for free? Yeah. So that doesn't make sense, right? Absolutely. That is what, yeah, it has. It still is happening. Some pet parents comes. So, do we need to pay the consultation? Yeah, you're spending 15, 20 minutes, sometime half an hour discussing so many things, nutrition till so many of aspects. So then, yeah, it has to be paid. It has to be clearly understood by pet parents. That is chargeable actually. Yes, Yes. right. Because when we go to a human doctor, Yes. the same concept doesn't really apply. Absolutely. And having to deal with can I have discount on this, discount on that kind of conversation is a bane for all the vets. So, also coming to this point that I do understand as a vet, acknowledge this fact that sometimes the medical bills can be really high, heavy on the pockets. And especially when surgeries knock your door out of the blue. So, that's an additional expensive affair, something which a pet parent might not be financially in a comfortable position. So, that's when pet insurance comes into picture. So, Abhishek, why don't you first of all lay out this idea to the pet parents who have completely zero knowledge about it, like how the pet insurance actually works, can be beneficial to them, and how similar or different it is as compared to human health insurance. So, pet insurance is more or less similar to human insurance only. The only difference is कि human insurance reimbursement से शुरू हुआ and now it is in cashless mode, right? Pet insurance अभी recently started, so it is in on reimbursement model है, ठीक है? But the terminologies are same, like premium amount, right? Coverage amount, sum insured, exclusions, pre-existing. So ये जो terminologies है, that these are exactly the same as in case of humans, ठीक है? And talking about how it can benefit कि suppose as you already mentioned कि अपन एक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं assuming कि अपने को 3,000 5,000 का कॉस्ट पड़ेगा, बट ड्यूरिंग द डायग्नोसिस इट मे कॉस्ट यू अराउंड 12,000 15,000, इन फैक्ट 40,000 50,000, ठीक है, अगर वो सर्जरी वगैरह होता है तो. आई ड्यूरिंग अ वेट विजिट आई एनकाउंटर्ड वन इंसिडेंट कि जहाँ पे फ्रैक्चर था, इट वॉज अ जर्मन शेफर्ड, फ्रैक्चर था एंड फ्रैक्चर इज सपोज टू बी ट्रीटेड अंडर 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा क्या लगेगा, बट वो फ्रैक्चर ट्रीट नहीं हो पाया एंड इट गॉट कन्वर्टेड टू सर्जरी, ठीक है, सर्जरी करना पड़ा एंड वो एक्सपेंस जो है वो 45-50,000 के करीब चला गया. सो दैट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ पेट्स. तो अगर इफ़ यू हैव अ गुड इंश्योरेंस प्लान तो दैट सर्जरी एक्सपेंस कैन बी बॉर्न बाय दैट इंश्योरेंस, राइट? वो आपको आउट ऑफ पॉकेट नहीं देना पड़ेगा. सो दैट इज़ हाउ, अगर आप इफ़ यू हैव अ गुड इंश्योरेंस प्लान तो दैट विल हेल्प यू आउट सेविंग योर गुड चंक ऑफ अमाउंट. टॉकिंग अबाउट पेटॉस, तो हमने थोड़े से कॉस्ट को और भी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करी. फॉर एग्जांपल एज आई मेंशन्ड अर्लियर, किट इज़ कम्प्लीटली ऑन रीइंबर्समेंट मॉडल. तो रीइंबर्समेंट में आपको अभी आपके जेब से पे कर रहे हैं वॉट एवर द कॉस्ट इट इज़, राइट? सो
हमारे पास जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है एंड पेमेंट फैसिलिटी है, थ्रू दैट अगर आप वो अमाउंट पे करते हो तो आपको 10% का कैशबैक भी मिल रहा है. सो हमने वो कॉस्ट रिडक्शन का भी एक मेजर ध्यान में रखा था, एंड दैट इज़ हाउ वी आर बिल्डिंग पेटॉस. ठीक है. सो एंड सेइंग दिस, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आवर पेट पेरेंट्स कि ऑलवेज गो फॉर अ बेटर इंश्योरेंस प्लान. जैसे लास्ट टाइम वो न्यूज़ आया था अबाउट दैट फेमस एक्ट्रेस हीना खान. शी मैंशनड कि अपन लग्जरी स्पेंस तो कर देते हैं, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू परचेज अ हेल्थ इंश्योरेंस तो अपन उसमें कंजूसी कर देते हैं, ठीक है, बट यू नेवर नो कब आपके साथ क्या हो जाए, राइट. सो दैट आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई पेट पेरेंट्स कि ऑलवेज गो फॉर अ बेटर प्लान जो आपको एंड टू एंड कवरेज दे सके. ठीक है. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड से. I believe that pet insurance is still in a very nascent stage, and it's more practically implemented outside India. But in India, it is still not very much hugely implemented in vet clinics and hospitals. Of course, more and more vets in Delhi NCR and maybe in other cities also, they are getting enrolled with PETOS and other health insurances also for that matter. But for a pet parent's perspective, if they want to go for a basic plan, so how much would it cost? What inclusions and exclusions would it entail? Sure, a beautiful question actually. देयर इज़ अ मिथ कि अगर मैं इंश्योरेंस लेता हूँ तो मेरे को बहुत हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट द केस विद पेट इंश्योरेंस. टॉकिंग अबाउट बेसिक प्लान जो अपन ऑफर करते हैं, दैट इज़ बेयरली 500 अ मंथ. ठीक है. मतलब आप इट इज़ इक्विवेलेंट टू एक स्टारबक्स कॉफ़ी, आई बिलीव, राइट. सो आपको लेस ऑन दैट इन फैक्ट, राइट. तो एंड इन दैट प्लान आपको a pet parent will get 1 lakh का sum insured over surgery, 30,000 का उनको टर्मिनल इलनेस कवर मिल रहा है, OPD कवरेजेस मिल रहे हैं 30,000 के. आपको थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ मिल रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द पेट पेरेंट विल गेट वैक्सीनेशंस, एनुअल वैक्सीनेशंस, 2 वैक्सीन्स उनको साल के मिल रहे हैं, डिवॉर्मिंग मिल रहे हैं, वेट कंसल्टेशन मिल रहे हैं. सो दीज आर ऑल set of inclusions in a वो 500 monthly plan वाले में. Vaccinations include the boosters as well? No, vaccination does not include boosters. Annual vaccination है once a year, right? So suppose if it is anti-rabies, तो pet parent जो है एक साल में एक बार anti-rabies उसको claim कर सकते हैं, right? So total 4 vaccines, I suppose, because we have 2 core vaccines and 2 non-core vaccines, and boosters are separate. No, we have included the basic ones actually. So like 9-in-1 and 9-in-1 rabies. anti-rabies, right? And cats के लिए same है FELV, right? And how many dewormings, if you talk about dogs? Based on the plan which I'm talking about, 6,000 वाला plan है, उसमें आपको twice a year आपको deworming मिल रहा है, twice a year consultation मिल रहा है. So these are some sort of things that we, and ये अपन इंश्योरेंस अवेयर, सिंस पेट इंश्योरेंस इज़ नॉट वेल अवेयर, राइट. मतलब पेट पेरेंट्स को बहुत केस में पता नहीं है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है उनके फरी फ्रेंड्स के लिए. तो हमने इसको प्रमोट करने के लिए थोड़े और भी बेनिफिट्स ऐड किए हैं, विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इंश्योरेंस के अपार्ट है, राइट. तो दिस इज, So this was the basic plan that you talked या about. बेसिक प्लान एक्चुअली. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम वंस, तो उसमें लॉन्ग टर्म केयर कवरेज भी एडेड है. लॉन्ग टर्म केयर कवर एज इन डायबिटीज़, राइट. आपको टर्मिनल इलनेसेस भी कवर्ड है, जिसमें कैंसर या फिर डॉक्टर साहब वुड बी वेरी मच, जैसे कैंसर हो गया या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो गए. सो दीज आर ऑल कवर्ड अंडर दैट इंश्योरेंस प्लान. ठीक है. Orthopedic and soft tissue surgeries as well? नो, एक्चुअली अभी वो सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, बिकॉज एज वी ऑलरेडी अवेयर कि बहुत ही नया प्रोडक्ट है, बट आई एम प्रेटी श्योर कि डाउन द लाइन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होएंगी, राइट. But is there any surgery that is included? हाँ, सर्जरी एक्सपेंसेस में suppose if it Hospitalization, post-operative care in the hospitalization, that will be covered, that will but not as a procedure. Procedure, for example, spay करना है जिसमें uterus ovary निकालना है. So like I would like to highlight कि जो भी cosmetics related surgeries हैं, those are not covered. But for example, there is a bladder stones. That is covered. That will be covered. That will be covered, right. Piece of the procedure will be paid. Procedure will be paid, right. Yeah, or any tumors they have. Tumors are covered. They will be covered. For example, any pet has got foreign bodies
He is ingested and he has gone through a stomach surgery or intestine surgery. So that's paid. Those all Those are paid. Yeah, but if he got a fracture leg, so that is not covered. Is that so? No, that is covered. So Fractures then are also covered. orthopedics in that sense. Orthopedics are covered. Yeah. So yeah. And spay neuter is also covered. Spaying, neutering is not covered. Not covered. Cosmetics related surgeries and reproductive related surgeries are not covered actually. Okay. Dental are not covered. C-sex, cesarean sections. That actually I'm not a veterinary, right? But I believe कि जो भी basic surgeries and cost आता होगा vets को, pet parents को, that is covered. That is covered. So generally they are covered actually. Generally, Yeah. So as we discussed, तो जो भी इंश्योरेंस कवरेज इज दैट दोज आर वेरी जेनरिक. ठीक है, वो कोई भी आप इंश्योरेंस प्लान आप ऑप्ट करोगे इरेस्पेक्टिव ऑफ इधर इट इज टू पेटॉस और आप बाहर से लेते हैं, वो सारी चीज़ें कवर्ड होंगी. पेटॉस एक्सक्लूसिव मैं बताऊं तो वेलनेस प्रोग्राम्स जो हम ऑफर करते हैं, कैशबैक फैसिलिटी एट आवर पार्टनर क्लिनिक्स जो मैंने बताया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो आपको वेट बिल्स पे पड़ते हैं, अगर वो आप पेटॉस कस्टमर हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा. जो वेट कंसल्टेशन मैंने बताया, दैट आर पेटॉस एक्सक्लूसिव एक्चुअली. Okay, that's good. Right. So this is helpful, I think, for both pet parents and vets also. But when we talk and address the problems that we face as vets on daily basis, so I think that some pet parents are already informed and they don't actually hesitate to pay all that they have for their pets. But some pet parents, they are very like stingy pet parents and they don't like to pay even a single penny, or they want the vet bill to be as minimum as possible. And in order not to give them a mini heart attack at the time of billing, so I think it's important for us also to lay a clear plan in advance, that first, okay, you have this problem, you want to, even if you want to discuss a blood report, you would be charged a consultation fee. Maybe even we can say them directly, or somebody from the help desk can convey this to them. When it comes to treatment also, it's important for us that we should tell them in advance that the problem that the pet is facing is so and so. This could be the differential, so we can go ahead with the treatment plan as per this. And if you want to go for any confirmatory diagnosis, we need to go ahead with some laboratory tests as well, which would be charged separately, because this is the amount that the lab is going to charge from us. We have not much interference in it. We cannot give you a lot of discounts on this. And after that, the medicines, of course, that would be billed separately, because many times pet parents compare that if I go to human chemist, I get easily up to 50% off or 30-40% off. But the same thing cannot be applied when it comes to the medicines in the veterinary industry, because even as vets, we don't get that % discount in all the medicines. So how do you think that we can better tackle it? Yes, as you said rightly, first of all, we have to give a approximate idea. See, if for example, some normal treatment is required, like for example, the vaccination, normally people know that is the general rate. That's all right. Some basic treatment is required, consultation with the skin issues and some injectable required. But when it comes to a little bit more to that, for example, to surgeries, or something like where we need to, some blood tests are required, some x-rays or ultrasound diagnostics are required. So we should, like we in practice, we give an approximate idea. This is going to be your estimate. This will be for your blood test. This will cost around ultrasound or x-rays. And if the surgery is required, for example, a pyometra where the uterus infection is there, so that will cost of the surgery will be required, and something after post-operative care. So that approximate idea from low range to high range normally should be discussed, and that's what we try to do with our clients. So that helped. At least they are not shocked all of a sudden. Like for example, fewer down the line, a particular surgery will be around 7,000-8,000 or 10,000 type, but that has gone double. And because of so many, like if you see the expenses of the practice, taking for a rent or our employees, there is medicines, the equipments,
there is miscellaneous. There's so many of things if you just put into this. We're not just technical, but if you part of the economic part of it, so that comes to be huge of a clinic or a hospital. So it has to be done judicially in the right rational way from a practitioner point of view. So, but from a pet parent point of view, of course, they should be given a right estimate what it takes, and if there's a problem, so here that's why the insurance comes into place. And we, as in our hospital, we are absolutely promoting them willingly, so that more pet parents should have insurance, so they feel less of a problem in paying the bills. Like if we look at it in terms of percentage, if 10 pet parents walk up to you in a day, and if you propose this plan of pet insurance, how many do you think are ready for it? How many are up for it? See, out of 10, I should say 50% should be there, but only thing how we sort of present the plan. So that is also important. As a practitioner, we cannot really put too much time also onto this. But definitely, if they can give us some brochure, or we can put their number directly, and then they can sort of give the all what benefit they will get out of it, then probably the more number can be converted into that. But to me, fairly idea, probably if we directly say 50% should not be a problem. So that is what, if the long standing client, they trust you, and if you tell them this thing, so that should not be a problem. That's a conservative, ready kind of this thing, not aggressive sort of what I'm saying. Probably more, yeah. That is Agreeing to your point, actually. yeah. See what happens, like people don't know exactly is their pet insurance. Like if you see as a human medical insurance, a few years down the line, there was probably hardly any insurance. As these hospitals have come up, so now see everybody probably go toward insurance, even the government is providing. So that is there. So in same way, I hardly sort of like we just go with so many clients, and we hardly see any clients mentioning about insurance, even asking about pet insurance. They will just go and ask for the discounts straight. That's what they do. So, but now what we tell them, you better go for a insurance. So that is how. So actually, there is not much awareness. So there's a better way of giving them discounts. So it's a win-win situation from both the sides. Absolutely. But it is through the pet insurance. Pet insurance, yeah. So saying that, in our marketing lingo, we call it as a push product actually. So insurance is a push product. जैसा सर ने बताया कि 5 out of 10 would be happier to get their pet insured because there are some myths I believe ठीक around insurance. जब अपने को भी इंश्योरेंस लेना होता है तो जब अपन हॉस्पिटल में जाते तब अपने को चमकता है कि हाँ इंश्योरेंस होना चाहिए था, राइट. सो बिकॉज जब भी इंश्योरेंस अपने को ऐसा सुनता है तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि यार यहाँ पे तो 5 लाख का है, बट जब मैं क्लेम करने जाऊँगा तो मेरे को 2 लाख ही वो रीइंबर्स करेंगे, राइट. दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट इन पेट इंश्योरेंस बिकॉज इट इज़ ऑन रीइंबर्समेंट मॉडल. द कस्टमर हैज़ टू पे आउट ऑफ देयर पॉकेट इनिशियली, तब जाके वो बिल्स लगाएंगे एंड तब जाके उनको रीइंबर्समेंट होएगा. तो अनटिल अनलेस इट इज़ नॉट कैशलेस तो ये चैलेंजेस आएंगे. एंड देयर आवर मिशन इज़ टू फैसिलिटेट द इंश्योरेंस विथ अ प्रॉपर क्लेम प्रोसेस, राइट. अगर मैं क्लेम को स्मूथ कर देता हूँ, अगर एंड इफ़ फॉर पेट पेरेंट अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट उनका रीइंबर्स करा देता हूँ, सो आई बिलीव कि जो नंबर है वो 50% से ऊपर जाएगा. वर्ड ऑफ माउथ विल कम अप, राइट. that is So there are some myths around it. But see, the process of settlement should be a little convenient. See, that should be sort of probably from an insurance company, that should be a bit of responsibility from that part probably. So then you put a paper and okay, so not too many follow-ups are done. So for example, there may be insurance claim of maybe 7,000, 8,000, 6,000, 5,000, 2,000. Then probably if it's in lakhs of rupee, we'll follow it up. But that sort of thing. So what isn't so? Agreed. But saying
the myth, one of the myth is कि हमें बहुत ज़्यादा follow up करना पड़ता है, right? Yeah, it is myth. Yeah. But why it is a myth? Because there are some sort of checklist, claim checklist जिसको अपन बोलते हैं. अगर आपके पास वेट बिल्स है प्रॉपर, आपके पास प्रेस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स है प्रॉपर, आपके पास डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है प्रॉपर, इफ़ यू आर रेडी विथ ऑल दी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो क्लेम जो है आपको 2 वीक में हो जाएगा. द चैलेंज इज कि सिंस द पेट पेरेंट आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट दी डॉक्यूमेंट्स दे आर सपोज टू सबमिट टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो उनको बार बार कॉल्स आते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है. इन सम केसेस वो गुम जाता है उनसे, राइट, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि इसको रखना है. सो I think should be put into proper headlines exactly when you showing on the brochure or whatever, giving the documents. So these should be headlines. These are the document required. Exactly. That is what we are actually solving. हम जैसे इंश्योरेंस कस्टमर को ऑफर करते हैं, हम उसी वक्त उनको बताते हैं कि जब क्लेम की बारी आएगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. हाँ. तो जब मैं इनिशियली इन्फॉर्म कर देता हूँ पेट पेरेंट को, तो द पेट पेरेंट इज़ मोर लाइकली टू कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो उनको सबमिट करना होता है. तो और जब ये मैं अवेयर ना करूँ तो चैलेंजेस की क्लेम करते वक्त उनको याद आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी उनको फॉलोअप करेगी कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट है नहीं, वहाँ पे रीइंबर्समेंट अमाउंट कम हो जाता है, वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट जो टैट है वो बढ़ जाता है, एंड फिर वहाँ पे आता है कि इंश्योरेंस हमें क्लेम नहीं देता है, राइट. सो दिस इज इट इज़ एज सिंपल एज मतलब. एंड टॉकिंग अबाउट वो कॉस्ट, तो ऑब्वियसली हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी थ्रू पेटॉस कि जो एडिशनल आप डिस्काउंट की बात कर रहे थे. सो यू ऑल अ डॉक्टर, ठीक है, अगर वो डिस्काउंट कस्टमर को डायरेक्टली मिल जाए विदाउट आस्किंग यू, तो वुडंट इट बी अ गुड थिंग फॉर पेट पेरेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स, राइट. तो हमने इसको सॉल्व ऐसे किया कि जो भी आपके फाइनल बिल्स हैं आप उसको पेटॉस से पे करो, एंड ओवर दैट फाइनल बिल अमाउंट you will get 10% cashback, and that is flat cashback जिस पे कोई लिमिटेशन नहीं है. you can use it upfront कभी भी, लेकिन वो पार्टनर क्लिनिक्स के थ्रू ही ऑब्वियसली चैनलाइज होएगा, बट यू कैन यूज इट फॉर बाइंग पेट फूड. जो भी आपके क्लिनिक पे सर्विसेज अवेलेबल है आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आई बिलीव कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल. ठीक है. So the process is initiated in how many days? Is it a long process, a tedious one? About the cashback, Everything actually. no. So the process starts with you have to just come up to the website, fill your basic details, and वो basic details के बाद अपन 1 week का टैट है, because So can be done online easily. yeah it can be done easily online, right. आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स उसमें भरने होते हैं, राइट. पेट पेरेंट्स की डिटेल्स अपन आस्क करते हैं, पेट की डिटेल्स आस्क करते हैं, राइट. एंड वंस यू सबमिट इट, मैक्सिमम टैट इज़ 1 week, राइट. बट 2 से 3 दिन में एवरेजली आपको इंश्योरेंस इशू हो जाता है, एंड देयर इज़ अ वेटिंग पीरियड, ठीक है, टू एक्सेस दैट इंश्योरेंस. सो एक्सीडेंटल इज़ द ओनली केस जहाँ पे आपको जिस दिन आपने पे किया इंश्योरेंस प्लान के लिए उसके नेक्स्ट डे से एक्टिव हो जाएगा, राइट. फॉर अदर केसेज देयर इज़ अ स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड ऑफ 30 days, 1 month. फॉर जायंट ब्रीड डॉग्स एंड फॉर डॉग्स या फिर पेट्स, सॉरी, because cats are also included. For pets who are older than 4 years of age, तो वहाँ पे 3 महीने का वेटिंग पीरियड आता है, बिकॉज उस केस में पीडीज के चांसेस थोड़े होते हैं, ठीक. तो इनिशियल 3 months वेटिंग पीरियड इज देयर, एंड पोस्ट दैट वेटिंग पीरियड यू आर गुड टू गो, whether it is surgery, whether it is OPD. So it is as simple as that. कैशबैक की मैं बात करूँ तो अपफ्रंट वो कैशबैक मिलता है. आपने जैसे पे किया, हमारा 24 hours का टैट है, 24 hours के अंदर आपको कैशबैक मिल जाएगा आपके वॉलेट में. इफ़ नहीं मिलता है तो हमारी टीम विल रीच आउट टू यू, एंड यू आर सपोज टू अपलोड दैट बिल. जो भी आपने बिल फाइनल अमाउंट पे किया है उसका आप बिल अपलोड करो एप्लीकेशन पे, एंड बेस्ड ऑन दैट बिल यू विल गेट इट डिस्बर्स्ड. Also, one more thing that I wanted to ask, you mentioned about vet bill. So, does the vet bill need to have a GST number? No, that is also a myth, right. Because most of the हाँ, मतलब clinics don't have. the company has made sure कि वो जितना सिंपल रख सके पेट इंश्योरेंस को. So that is not a mandatory one. Yeah, if it is, तो it is good, but that is not a mandatory one, right? Right. So, I think it's a good learning for the pet parents also, because of course, for any insurance, there are a lot of terms and conditions and hidden terms and conditions that we are not aware of. And
the font is also so small that we Right. they are actually intentionally made in such a way that we kind of overlook them. But it's good that the pet insurance is actually existent in the market, because if you talk about like 10 years, I'm sure so you can attest for it well. The scenario was very different back then. Pet parents used to come up, not every, I would say, once in like 20-25 would come up to the clinic and say, acha itna bill hai, so is there something like pet insurance? So that time our answer used to be like no. It does exist outside India, but in India it is still not very prevalent. But now the answers have changed. We can tell them that yes, pet insurance do exist. They do have a better way of discounting on the vet bills. So Petos is of course one of them, and like you mentioned, it's an online form submission thing. The process is easy, I'm sure, and the claims are also quick and fast. Right. But they need to understand that like for every, like I mentioned, the terms and condition thing, so you need to be aware of the fact that what form submissions, what are the details that you need to submit in order to have a smooth claim or a cashback or whatever in return. So saying that, I would say there are only two things which bothers a pet parent. The first one is exclusion. They are not well aware of it, what all are excluded. And the second one is PEDs, pre-existing conditions, right? उनको ये नहीं पता नहीं होता है कि pre-existing वाला केस है, right? जब वो बिल सबमिट करते हैं then they come to know कि भाई ये तो pre-existing वाला केस है, आपके पैसे नहीं मिलेंगे. सो बस जो मेजर पॉइंट पेन पॉइंट है पेट पेरेंट के लिए दो है. बिकॉज बीइंग अ इंश्योरेंस गाय, मैंने पूरे वो जो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स हैं मैंने पढ़े हैं, राइट? यहाँ पे अटकता है क्लेम्स. सेइंग दैट, अगर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अ पेट पेरेंट कि जब जैसे ही उनको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, वो उसको अपने किसी लॉयर से, या फिर आज के डेट में चैट जीपीटी इटसेल्फ अ लॉयर, राइट? तो आप चैट जीपीटी पर डालो, उसको पूछ लो what all are included. मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ. Like, whether do you it is mention covered. it from your end clearly? Yeah, we or- try to mention it. We try to highlight Okay. it. But that is not possible to convey it to each and every pet parent over call. So But they हम also अपने have to be document aware हैं. from their end. हाँ. So documents में clearly mentioned है कि these are the only inclusions and these are exclusions actually. But the major challenge happens when PEDs वाला factor आता है तो. And I would like ask डॉक्टर साहब कि वी रिकमेंड कि आप हर साल एनुअल रूटीन चेकअप्स के लिए जाए, सो दैट इफ कोई पीडी आने वाला हो तो आपको पहले ही पता चल जाए. Absolutely. So that's what we have a like normal health protocol. Normally we do every annually, and after 5 years we do sort of annually the blood test, the chest X-rays, scans, and all. So that is where they come to know. Like for example, in the case of kidney issues, the creatinine level will not go beyond 1.4 when the 75% of nephrons of the units not gone died. So then there is preventive. If you find like some urine tests are there, as one SDMA test, there's few tests that can check up very initially the damages about that. So that is preventive part in health testing. We pretty go very nowadays. Exactly. That is what we try to convey to our pet parents कि get your pet insured as soon as possible. उनको लगता है, जैसे हमारे केस में अपन खुद को ग्रांटेड ले लेते हैं. सपोज अगर अपन 20s में हैं तो लगता है कि अभी तो हमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत, राइट? सो पेट्स के केस में भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जितनी अर्ली स्टेज पे पेट इंश्योरेंस लें वुड बी बेटर फॉर यू, बिकॉज पीडीज वाला जो केस है वो आपका कवर हो जाएगा उसमें. So it can be started as initial as from 45 days onwards also? So the initial entry age is 3 months, and the last entry age is 7 years, right? But it may go up to 10 years of age, but उसमें stating the fact कि जो इंश्योरेंस है आपको 5th ईयर पे ले लेना है, राइट? आप 5th ईयर तक पे अगर परचेज करते हो तो इट में गो अप टू 10 years of age for dogs and till 12 years of age for cats. ठीक है. But suppose if someone
इज टेकिंग इट एट द एज ऑफ 6 और 7, तो 7 ईयर्स तक ही वो एंटर कर पाएगा, उसके ऊपर वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। और अगर 5 इयर्स में लिया तो 10 इयर्स तक वैलिड वो होगा। हाँ 10 ईयर्स तक वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। ओके, that is the case. व्हाट इफ इट ब्रेक्स? सो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, दैट इज आई बिलीव द केस विथ ह्यूमन इंश्योरेंस एज वेल। आपका पीईडी तभी कवर होएगा जब आपका इंश्योरेंस ब्रेक ना करे। तो पेट्स के केस में भी Actually, it should be done like we should, as a vet, should be tell them like they're coming for the vaccination, so they are pretty serious initially. So as a this thing brochure or something, we can also tell like you can get the insurance done. So like they are coming almost every week or 15 days for initial vaccinations. So these can be introduced initially. Exactly. The chances are there because they will go for it, na? Exactly. Yeah. Agreed. Yeah. so also let's also focus on this point so that people's understanding is better in this. How similar or how different it is from human insurance? Good question actually. So human insurance has evolved a lot. Reimbursement से शुरू हुआ था in 2000s and अभी कैशलेस में है, राइट। सो इस 25 ईयर्स में बहुत ही इवॉल्व हुआ है ह्यूमन इंश्योरेंस। आज के डेट में मैं बताऊँ, जो भी मेरे को इलनेस मैं सोचूं शायद दैट इज़ कवर्ड, राइट। कैशलेस बेनिफिट, कैशलेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपको इनिशियली पता चल जाता है कि आपको कितना बिल अपने आउट ऑफ पॉकेट पे करना है, राइट। सिमिलरली पेट्स इंश्योरेंस के केस में आपको टर्मिनोलॉजीज आर सेम, ठीक है, जो मैंने बताया कि सम इंश्योर्ड क्या है, कवरेजेस क्या है, एक्सक्लूजन्स क्या है, इंक्लूजन्स क्या है, ह्यूमंस पे भी बताते हैं अपन, पेट्स पे भी बताते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन कैशलेस फैसिलिटी, राइट। तो दैट इज़ द डिफरेंस वन। एंड सेकेंड कि वो एक्सटेंसिव कवरेजेस अवेलेबल नहीं है पेट्स के केस में, राइट। हमारे केस में अपन प्रीमियम को ओवर पे करके, मतलब टॉपअप करके अपन पीडीज के टाइम को कम कर सकते हैं, जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे में ग्रुप मेडिक्लेम का भी इन ह्यूमंस ग्रुप मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जहाँ पे एम्प्लॉइज़ बेनिफिट के तौर पे आपको इंश्योरेंस मिलता है, वहाँ पे पीडी इज़ कवर फ्रॉम द डे वन, राइट। तो पेट्स के केस में यह भी फैसिलिटी नहीं है। वी आर ट्राइंग टू लाइक डाउन द लाइन, आई बिलीव कि 1-2 साल में इसको अपन कॉर्पोरेट में भी इंक्लूड कर सकें, सो दैट if you are going for a GMC group mediclaim policy, so you may also include your pet as your family member, right? So we are already working on it, so to bridge that gap. So that is the basic difference. Extensive coverage is not there for pets, जो humans के केस में आज आ चुका है, and second is कि वो GMCs वगैरह available नहीं है, and cashless is not there. Right, but I still believe that pet insurance is still in infancy stage. So if we compare it with pet insurance outside India, like countries like US, of course more advanced versions are there. So how do you think that or in what time do you think it will take us to bridge that gap or to be able to provide better services to the pet parents in terms of insurances? Not more than 3 or 4 years, I believe, because the awareness is like shooting up, right? And इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। सो आई बिलीव कि डाउन द लाइन 3-4 ईयर्स में वी वुड बी एबल टू मैच द ऑफरिंग्स इन द वेस्ट, राइट। वहाँ पे जैसे एज है फॉर डॉग्स, इट इज़ अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, हम ऑलरेडी 10 ईयर्स तक पहुँच चुके हैं। उनके केस में वैक्सीनेशंस आर ऑल्सो कवर्ड। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ट्रूपानियन, राइट। सो वो एंड टू एंड कवरेज करते हैं, वॉट एवर द इलनेसेस, उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो आई बिलीव कि डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स में जैसे अपन इंश्योरेंस प्लस वेलनेस दे रहे हैं, वेलनेस वो है जो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है, तो हमने ये प्लान, एक पैकेज क्रिएट कर दिया फॉर दीज यूनिट्स ऑफ पेट पेरेंट्स। आई बिलीव कि 3 से 4 साल में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वेलनेस पैकेज है वुड बी पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लान इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज़ जस्ट मेयर ऑफ अवेयरनेस दैट आई वुड से, एंड मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आके पूछते हैं खुद से, तो ऐसे और भी अवेयरनेस बढ़ेगा, और भी लोग इंटरेस्ट होंगे, वो लोग इंश्योरेंस लेंगे, एंड व्हेन देयर इज द डिमांड देयर वुड बी सप्लाई, बिलीव, ठीक है। तो दैट इज द डिमांड। अभी इतनी डिमांड नहीं है बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है, दे डोंट इवन नो दैट समथिंग लाइक पेट इंश्योरेंस आल्सो एग्जिस्ट्स। एग्जैक्टली।
first of all, if they know about it only, then they'll be able to enroll to it. Exactly. So I think somehow it's the duty of on our sides also as vets to make them informed about this thing, so that those who can take the benefit of it, they can easily. I believe once the claims are settled in a proper way, तो उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मतलब पेट इंश्योरेंस जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, क्लेम्स भी मिलते हैं अपने को. तो दैट विल ऑल्सो प्रमोट द पेट पेरेंट्स टू गेट देयर पेट इंश्योर्ड. एक्चुअली दैट इज व्हाट वी बिलीव. What if a pet parent doesn't find it very useful, so they want to terminate it? So what's the process for that? That is less likely to happen. But if that is the case, so initially जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो द पेट पेरेंट आर गिवन अ विंडो ऑफ 15 days, जिसको अपन फ्री लुक पीरियड बोलते हैं, राइट? Like the initial 15 days? इनिशियल 15 days, ठीक है, जस्ट आफ्टर परचेजिंग द पॉलिसी, उसमें आप कैंसिल कर सकते हैं. बट वंस यू क्लेम इट, जो भी आप 1 रुपये का भी क्लेम कर लेते हो उसे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू कैंसिल योर पॉलिसी. मतलब यू मे बट यू वॉन्ट गेट रिफंड, राइट? बट आपने क्लेम नहीं किया अभी तक, एंड डाउन द लाइन 3 months 4 months 5 months अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, सो यू मे कैंसिल इट. और उसके कुछ रेट्स हैं, उस रेट्स पे कुछ डिडक्शन होंगे एंड कुछ अमाउंट आपको वापस आ जाएगा. बट दैट इज़, आई बिलीव कि अगर इंश्योरेंस इज एज चीप एज 500 rupees a month, तो no one would like opt in for cancelling the policy अगर उन्होंने खरीद लिया तो. दैट इज़ व्हाट वी बिलीव. एंड अगर उनके बिल्स जो डिस्काउंट्स वो एक्सपेक्ट करते हैं वेट से, अगर वो उनको मिल जाए इंश्योरेंस से, फिर तो. Sir, you have been a long-standing pet parent, so have you got pet insurance for your pets yet? Not yet, but I'm planning to buy from Petos only. So, but I have few questions as a pet parent. What should be the right age to start? For example, like the insurance starts by 3 months of age. We should get 3 months of age, or we should get 1 year of age, 2 year or 3 year. So, what you think it should be the? So I believe get your pet insured as soon as possible, because talking about illnesses, accidents may happen anytime. Pets है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. So accidental case जो है वो कभी भी आ सकता है. You maybe like you can make sure कि हाँ वो illnesses बहुत बाद में आएंगे, but accidents कभी भी आएंगे. So if it is insured, और जितना अर्ली स्टेज पे लेते हो उतना सस्ता पड़ता है, राइट? Okay. So might be possible कि आपको insurance 3 months में ही शुरू में ही लेना चाहिए. 3 months में शुरू में लेना ठीक है. चाहिए. So another question is like, if pet is stolen or maybe he's no more because of. So what is the in that case is being Yeah. compensated? So generally it is covered, right? Insurance company do provide stolen pet mortality benefits actually. ठीक है? Mortality benefits. हाँ, we do cover theft and stolen, but we do not cover mortality, because we believe कि pet is baby to a pet parent, right? Yeah. तो no pet parent would want money अगर उसके pet को कुछ हो जाता है तो. Okay. So from that morality point of view, we thought कि we should not include mortality benefit, right? Okay. Fine. Okay. And another question is like, for example, like my pet is got stone. It's gotten a stone in the bladder, and with all the diagnostic gone, X-rays and all. So he has been advised to go for a surgery where his stone has to be removed from the bladder. And aftercare will be like 5 days. He has to be kept in the hospital. So approximate bill, like for example, if it's come for a surgery is around something 25 to 30,000 for a surgery, and some miscellaneous cost around 5,000. And then every day cost will be approx 3,500 to 4,000 per day, and that comes to be like 5 days minimum of hospitalization. So that if you say 4 and 20, that's going up to 50 to 60,000 approx for this procedure. So how much will be sort of paid into that, or what is the cap into this? So that is my another question. So talking about the PETOS, so based on the plans that the pet parent is actually opting for,
So there are specific cappings over the talking about suppose if it is a surgery, तो surgery पे 40,000 का limit है एक plan में, तो for another plan it is 1 lakh का cover, capping, right? That is a surgery cover. Surgery cover, right? अच्छा, बट उसमें हॉस्पिटलाइजेशन अलग से है, जो अलग से है, right? उसका अलग से है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस Okay. प्लान कि Okay. सर्जरी आपको एक कवरेज है, उसके बाद आपके पास हॉस्पिटलाइजेशन का अलग लिमिट है एंड ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स. तो सपोज अगर आपका सर्जरी एग्जॉस्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन में जितना भी आपका लिमिट है वो अलग से आपको मिल रहा है. सो इट मे गो अप टू 50,000 रुपीज़. इट्स अ लमसम सॉर्ट ऑफ, और या फिर डेली बेसिस के बेस पे होता है. नो, सो सिंस इट इज़ ऑन रीइंबर्समेंट मॉडल, तो जब आप पूरा एक्सपेंस कर लेते हैं, पूरा आपका सर्जरी कंप्लीट हो जाता है, व्हेन यू गॉट अ लेटर फ्रॉम द वेट कि हाँ अब मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, नो फर्दर ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, देन दैट क्लेम प्रोसेस स्टार्ट्स. तो इट इज़ अ लमसम अमाउंट जो आपको एंड में मिलता है. बट द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के केस में प्री एंड पोस्ट 15 डिजीज़ का कवरेज है, राइट? सो अगर आपको डायग्नोस्टिक्स है, बिकॉज सर्जरी तो जब होएगा तब होएगा, पहले तो आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस भी कवर्ड है. हो सकता है रूटीन डायग्नोसिस भी होए पोस्ट ट्रीटमेंट, तो वो डायग्नोसिस भी कवर्ड है. एंड वंस एवरीथिंग इज़ डन, तब जाके डॉक्टर उसको बताएंगे कि हाँ इज़ वेल क्योर्ड, एंड तब जाके वो क्लेम्स के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, एंड बाय द विद इन द 2 वीक्स जो टैट है उनका, उसके अंदर उनका डिस्बर्स हो जाएगा अमाउंट. So, after having understood what are the inclusions and exclusions of pet insurance, I think it's a win-win situation on all three ends. For a pet parent also, that it's easy on the pocket. They don't have to literally burn holes in their pockets to be able to bear that expenses. For the insurance company also, and even as vets, because it's very saddening for us also to see that a pet is not being treated because the pet parent is not in a financially comfortable position. So at least this way they'll be able to bear the cost happily or in a better comfortably position, and we'll be able to provide our services also. So that satisfaction would be there in our hearts also at the end of the day, and it would be, a sad story, like, the pet could have been saved, but because of the financial constraints we were not able to save the pet. Because as vets also, we do provide discounts on various things, sometimes without even saying, right? For strays, of course, we do provide. Most of the vets, they don't charge any consultation fee. That goes without saying. But for pets also, especially when we know that they have a genuine financial problem, and they have been a regular, our pet parent visitor to us, so we do provide discounts. But even we are kind of, bound that we have our own limitations. So I think this way it's a more systematic, more organized industry, both the vet industry as well. It's easier for the pet parents and the pet insurance as well. How do you look at it, sir? Yes, it is actually win-win for all. For example, pet parent come and if they are financially, it's not that comfortable position, so then it always become a little burden on them. So by doing insurance, at least they're coming out of that mindset, because they can at least take care